monomeric sugars, carboxylic acid, and oligomers. They were the major components. And this collaboration was with Syracuse University, where Liu is a chemical engineer and scientist of world repute. Next. Leaf of Polonia also, it has wonderful properties. If you see, I'm sorry, the table is, it has very small letters, but you can see that the alfalfa, so it can become a wonderful feed. The other properties of leaf analysis of field grown trees are given here. Next. We have done extensive study in the honey production because Polonia flowers luxuriantly. Flowers are highly nectariferous, and the quality of honey is one of the best uh, in the world, I can say. Yes, it may not be as good as Manuka honey from New Zealand, but it's pretty good. And this work motivated many farmers far and wide, far and wide, and then they started their own honey production units. They are planting Apollonia trees, they are putting beehives underneath, and then they are having a very successful production of honey. After 3 years of growth in my 5-acre farm at my university, in 10 weeks we produce around 500 pounds of honey. Next. There are so many herbal medicines which are prevalent under traditional Chinese medicine in China. Each and every part of the plant is responsible for some kind of bioactive compounds. Anti-cancer, anti-inflammatory, all great properties. Anti-obesity compounds have been found. And recently, during the coronavirus time, there were certain C-geranyl compounds. They were extracted and they were found to be protease inhibitor, to kill coronavirus. So those studies are in progress all over the world, and it has become even more important from a research point of view. Next. These are some of the research from different parts of the world which are emphasizing the medicinal properties of this plant. Next. So this is now my recent and most current research, which I am interested in. Polonia has many different types of trichomes, non-glandular, glandular, palsate type, dendritic type, and they all harbor some very interesting bioactive compounds. So we are in the process of extracting those compounds and find out their medicinal properties. Next. For the production of plants, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड शासन श्री सुबोध उनियाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद, आपका महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की थीम विजन फॉर विकसित भारत एक्ट 2047 के अंतर्गत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार से समेकित एवं सतत विकास की अवधारणा को परिलक्षित किया जाए, जिसमें हमारे भारत सरकार द्वारा 4 महत्वपूर्ण जो स्तंभ है, जिसमें किसान से लेकर, युवा से लेकर, गरीब से लेकर और जो महिलाएं हैं उनकी क्या भूमिका होगी और किस प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। मैं आपका पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच अभी प्रोफेसर निर्मल जोशी सर फोर्ट वैली स्टेट से उपस्थित थे और उनका अभी सर प्रेजेंटेशन चल रहा था।
तो इसी क्रम में प्लीज सर आपकी कैसे प्रोफेसर सर आप कंटिन्यू रखें प्लीज with your kind permission sir may I proceed thank you so once we realize the importance of this tree and realize its demand all over the world, we thought that okay, mass multiplication of elite varieties is very, very important. And we started developing the tissue culture protocol for it. My lab is totally dedicated to tissue culture of all the different economically important plants. In my lab, we work on more than 30 different plant species, trees, herbs, shrubs, different types of plants. So you can see here a protocol for mass multiplication, where within 6 months we can produce thousands of plants. And the second panel, it deals with the genetic transformation, that how you can integrate a particular gene, or further you can do gene editing to remove certain other genes. So you can modify. So gene editing will become more and more popular and acceptable, and it will also remove the stigma of GMO as well. So we are on the right track. Next slide, please. So after 2009, we've reached this far, and this because my university is agriculture university. It's an we've reached this far, and this because my university is agriculture university. It's a land grant institution where we do research, we teach, and our extension unit take all the research to the farmers. So we have 30 extension agents which cover 39 different districts in the state of Georgia. And once our research is completed, we provide them easy to assimilate protocols to the farmers. So you can see on that panel, Polonia growing for 10 years and 10 different users, and every year you increase the number of the revenue streams. So this helps farmer in many different ways. And those revenue streams are companion crop, leaf pellets, tea, honey, biochar, activated carbon, bioenergy, wood pellets, and timber. So if you look other picture, where picture where I've shown you the tree in full bloom, there are so many different uses you can realize from one tree. So I have found my tree in my geographical region. Now it's up to you to find out your kalpataru or kalpavriksha in your vicinity, because your climate is different. And the entire Uttarakhand is blessed. We do all have hundreds of kalpatarus. Please make the best use of them. Next slide, please. With this, I can conclude that the five most economically important trees in Uttarakhand, driving the timber, fuel, medicinal, and local economy are sal, cheed, oak, deodar, and rhododendron grass. And you all know that what it entails, how many different uses are there. Next slide. And five most economically promising plants would be kutki, jatamasi, giloy, apple, rhododendron. And secondary millets, ragi or mawa. It has become a health food of international repute now. Next slide, please. Now, I was looking at the literature, and I find that bamboo a game changer for Uttarakhand Tarai and Plains. We have Uttarakhand Bamboo and Development Board, but how much have we done? That will decide our Viksit Bharat dream. We have to set our bar very, very high with the top contenders in the world. Now, if you see here, China has turned bamboo into an economic powerhouse. It has 837 species, and bamboo in China is more than a plant. It's economic strategy.
Identification, inventory, conservation, and mass production should be a priority for multiple products. In entire Uttarakhand, there should be 10 tissue culture labs producing millions of plants and sending to all over the world. We have that potential. We have smart students. Next. Now, I'll just give you one example about bamboo. So, this biotech company in Hosur, near Bangalore, they deal with bamboo and they produce 100,000 plants every day. And my one of the fellow speakers here talked about biofuel and biohydrogen and all that. You can see here they are using for bio CNG, electricity, biofuel, coal replacement. They are energizing the entire energy sector with bamboo alone. You can see that. Please look for Gromore Laboratories, and you'll be able to see what they are doing. The other thing I want to stress here, the new Bangalore airport, you see that it has all bamboo in its structure, all bamboo. But sadly, all this bamboo came from China. Okay, so that's my problem. Why? I did my PhD from Shillong, and I traveled all northeast, Mizoram, Nagaland, and Mizoram is called land of flowering bamboo. We have such a wonderful diversity, so we have to tap. In Uttarakhand, they are saying they say that there are 15 plus different species of bamboo and regard. Please make use of that. So we have our kalpatarus distributed all around. Next. This is a plant which fascinated me always because I grew up in Dharchula. And this was the tree which was the main producer of honey and ghee. This is a fantastic tree. Isimo did a lot of work which deals with the mountains. And this could be source of wonderful economic adventure actually. It has medicines you can get out of it. Only 60% of this is currently harvested as market demand is limited. How can we turn it into an enterprise of international repute? Because the quality of honey and ghee both are of supreme level. So, Chiva soap, lip balm, scrub, or hand and body lotion could be developed as these handmade products are gaining popularity in niche market. Next, please. And I was surprised to learn that this chuva tree has been known as our own Kalpataru in some ancient literature. Parijat and all, they have been also considered as our Kalpataru, but there is in one of the, I think, religious books, this chuva plant is also known as Kalpataru. So you don't have any dearth of trees which can give you a very sustainable future for Viksit Bharat 2047. And you can see probably we need a second round of new Chipko movement, saving our plants. These are the two students who did a lot of work on Plania. Richa Bajaj, she is from Kanpur, and Lubna, she is from Chittorgarh. And you can also see the ancestral tree is also installed in iconography and literature. Next, please. The most important in this journey, it totally rests on youth, students, bright and active minds. Ask questions. Ask questions. Don't be hesitant. And dream big. You can do it. If from Dharchula I can do it, then you can do much better. With this, I'll finish my talk. Thank you so much. If you have any burning questions, you can ask me. Otherwise, I will be available outside too.
Thank you, Professor Nirmal Joshi sir. Hope Valley State University, जॉर्जिया हमारे बीच की नोट स्पीकर के रूप में उपस्थित थे और पर्यावरण के साथ साथ जो महत्वपूर्ण जो फील्ड है उसमें क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं और कैसे हम टॉर्च बियरर के रूप में एक अपनी नई भूमिका निभा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संजय कुमार सर से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल सर का पैज अलंकरण कर और साथ ही प्राचार्य मैम का सॉल पहनाकर माननीय मुख्य अतिथि का जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। पूर्व में कई इस सेमिनार में रिसोर्स पर्सन थे, उनके द्वारा उद्बोधन दिया गया, तो आपका इंतजार और उसके बाद फिर एक माननीय मुख्य अतिथि और इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार, तमाम व्यस्तताओं के बीच आपका अपने इस घर में महाविद्यालय में स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं मंचासीन सभी अतिथि और मुख्य अतिथि सर को निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्य अतिथि सर और सभी मंचासीन अतिथि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का एक सर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आपके कर कमलों से इस कार्यक्रम का एक नया स्वरूप इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में और महाविद्यालय की छात्र छात्राएं दीप प्रज्वलन की इस परंपरा में शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय मनस्पति। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण कि विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जैसी शख्सियत यहाँ पर आज हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और अपनी दूर दृष्टि से शहर को, राज्य को और समाज को अन्य सौगातें दी हैं। आपके मार्गदर्शन से निश्चित तौर पर हमें प्रेरणा मिलेगी और साथ ही मूर्ति का अनावरण भी किया जाना है। संयोजक महोदय डॉक्टर तो एक निश्चित तौर पर कई आपके द्वारा जो हमें यहाँ स्वागत प्रदान की गई है और एक बहुत ही एक अनुभव आपके द्वारा और उन स्मृतियों को याद करते हुए माननीय मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल जी, महाविद्यालय की छात्र छात्राएं तैयार रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन सभी अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि जी का दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत। और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से निवेदन कि स्वागत गीत अपना तैयार रखेंगे। सरस्वती वंदना के लिए महाविद्यालय की छात्राएं फ्रंट रो में, ठीक है, सरस्वती वंदना के लिए प्रीति।
धन्यवाद। और माननीय मुख्य अतिथि जी, इस 3 दिवसीय समागम में जो विजन फॉर विकसित भारत एक्ट 2 है, इसमें 300 से ज्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कुछ प्रेजेंटेशन अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, और साथ ही हमारे बीच सिविल सुमन यूनिवर्सिटी जयपुर, चंडीगढ़, उसके साथ ही साथ तमाम जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके भी हमारे बीच यहाँ पर पदाधिकारी, अधिकारी और की नोट स्पीकर भी उपस्थित हैं आपकी सूचना के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी। और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आपको सीधे एक ऐसी धरती पर जो मेडिकल टूरिज्म का हब भी है, गुड़गांव, और उसी गुड़गांव की धरती पर अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा उनकी डायनामिक लीडरशिप में 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और इस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का जो कमिटमेंट है शिक्षा के प्रति, रिसर्च के प्रति, नवोन्मेष के प्रति और होलिस्टिक एकेडमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, हमारे बीच माननीय कुलपति गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उपस्थित हैं। मैं प्रोफेसर संजय कौशिक सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप इस विजन को, इस थीम को अनुसंचित करते हुए इसका ताना बाना यहाँ पर रखेंगे। प्रोफेसर संजय कौशिक सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, प्रिंसिपल इस कॉलेज की प्रियंका जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को आर्किटेक्ट के भांति निभाया और निभा रहे हैं, ऐसे संजय कुमार जी, सभी लोग जो बाहर से आए हैं, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सुबह से तकरीबन 3-3.5 घंटे से जिस विषय की बात कर रहे हैं, और जब हम लोग बार बार विजन फॉर विकसित भारत 2047, a multi-dimensional approach to inclusive and sustainable development, and that too amid global challenges. You know, 3-4 figures we have heard since morning, and probably we must have remembered by now. One, we said
we are a $4.3 trillion economy. Now, saying it time and again that we are a $4.3 trillion economy, what does it mean? We were aspiring for $3 trillion. We then moved on to 3.5, 4. Now we are 4.3. We are aspiring for the club which says $5 trillion economy. We've been moving there very fast. Then we have heard time and again that, okay, we are a very fast growing economy. When we say fast growing economy, the growth rate we said, okay, it is 6.4, it has been 7 even, so on and so forth. So we are a very well growing economy. And then, something we can probably for the last 10 years, because we have improved upon a lot, 2.5 lakh is the per capita income, which is very good now and have improved for the last 10 years or so. Now, 2.5 lakh per capita income, with this much of the growth and the inflation being below 3%. So that is roughly 2.75% inflation. Now, these figures are suggesting that India in the year 2026 is doing very good. So we can be happy. Roughly, we are in 26, so roughly you call it 19, 20, 21 years more, and we want to achieve the developed economy tag. But, we have to reflect. But when I say we have to reflect, क्योंकि कैबिनेट मंत्री साहब भी बैठे हुए हैं और मैं खुद अगर एक यूनिवर्सिटी का एज ए वाइस चांसलर अगर यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ, हम सब लोग टीचर्स सामने बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो सरकार के लिए या सरकार की तरफ से या यूनिवर्सिटीज की तरफ से मिलाकर हम लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको मानते हुए सब बात करेंगे. देखिए, हम बार बार सुनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बार बार हम लोग सुनते हैं वी हैव 17 SDGs एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव इट वेल. हम ठीक से उनको प्राप्त कर भी नहीं पा रहे. अब ये जो 17 SDGs हैं, नाम लिखा है सस्टेनेबल. यकीन मानिए वो सस्टेनेबल को आप अगर कोई दूसरा शब्द ढूंढें तो वो बेसिकली सर्वाइवल के लिए है. इसके बगैर सर्वाइव हम लोग कर नहीं पाएंगे. और प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम तकरीबन हर एसडीजी में वी आर लैकिंग, इंक्लूडिंग द एजुकेशन. सो प्रोबेबली वहां से बात शुरू करते हैं कि हम लोग आज की डेट में वी आर डूइंग वेरी गुड, बट वी हैव टू रीच एट 2047 a developed economy, and when we have to reach there, so a complete stock of what is being done today has to be taken so that whatever is required we are able to do. Few things. You know what? In the last 3.5 years when we are sitting here in India, every third minute one suicide takes place. Every third minute. What does it mean? In 1 hour 20 suicides, in 3 hours 60 suicides. And when these suicides take place, अगर आप 20 साल पुरानी बात करेंगे तो जनरली सुसाइड्स किस लिए होते थे कि पैसा नहीं है, गरीबी है, वगैरह वगैरह. आज सुसाइड्स तो हैं, तकरीबन 2.25 लाख सुसाइड्स केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर एक साल में मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हुए. मेंटल डिसऑर्डर सुसाइड्स हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मैक्सिमम हुए. इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ ना कुछ, जब हम लोग बार बार विकसित भारत की बात कर रहे हैं और विकसित विकास करना है तो इस दिशा में पैरामीटर हमारा एक बनता है कि अगर हमने विकास करना है तो हेल्थ की दिशा में. अगर हेल्थ एक पैरामीटर है विकास करने का, तो उसके अंदर भी मेजर पोर्शन है आपकी मेंटल हेल्थ का. इसका मतलब उस मेंटल हेल्थ को प्रॉपरली विकास करिए. ये जितने सुसाइड्स हम लोग सुन रहे हैं, एक बार मेंटली हम लोग हेल्दी हो गए तो यकीन मानिए उसमें से 90% सुसाइड्स अपने आप खत्म हो जाएंगे. अब ये जितने, अगर आप इसको इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भी देखें, हिंदुस्तान के अंदर केवल एक साल, ये जो पिछला साल गया है, केवल एक साल के अंदर हिंदुस्तान में
हम बार बार 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक साल में मेंटल जो ऑर्डर हुए हैं उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है हिंदुस्तान को, कि वो लोग काम नहीं कर पाए, वो लोग बीमार रहे, अपसेंटिज्म हो गया। एक शब्द है जिसे हम प्रेजेंटिज्म बोलते हैं। प्रेजेंटिज्म का मतलब मैं प्रेजेंट तो हूं, यहां बैठा भी हूं, लेकिन काम नहीं कर रहा हूं। प्रेजेंट तो हूं, काम कर रहा हूं, पर बड़ी स्लो स्पीड से कर रहा हूं। तो जो इसकी वजह